Together? Which number? Point of order? My point of order is under Rule 216 and also under Article 113 of the Constitution of India. Sir, just now we have received this much of documents. Really, how are we to read it? And just now we have got it from the publication counter. And for the time being, it may be applicable only to the Union Territory of Jammu and Kashmir. You mentioned 216. 216. But that is a scope of debate on supplementary grants. Yeah, that is the, today morning I have read it already, it is on record. The sum and substance of Rule 216 is, original grants shall never be discussed along with the supplementary demands for grants. If you want to discuss, then the Honorable Speaker has to suspend the rules under 388. Without suspending the rule 216, how can we have the discussion on the original grants as well as the supplementary demands for grants? Now, two supplementary demands for grants in respect of Union Territory of Jammu Kashmir has already been placed before the House. That statement is before the House. And kindly go through Article 113 of the Constitution also. 113 of the Constitution is a constitutional right conferred upon the members of Parliament. And the country as such said, that is 113 says that procedure in Parliament with respect to the estimates. Clause 1. So much for the estimates as relates to expenditure charged upon the Consolidated Fund of India shall not be submitted to the vote of the Parliament, but nothing in this clause shall be construed as preventing the discussion in either House of the Parliament of any of these estimates. Even those estimates which were not being voted by the Parliament, even then those demands have to be placed before the House for the discussion. Because the House wants to know what are the receipts and what are the estimates. Even if I have heard that the BSc has already approved. Sir, my point is the Business Advisory Committee has no authority to float the rules. The rules are having paramount consideration. Ultimately, Mr. Honorable Member, ultimately, Business Advisory Committee, of course, takes decision. But the ultimate decision is taken by the Speaker. No, I am not questioning the direction or the decision of the Honorable Speaker. If the Speaker took the view, it's okay, fine. But no, your point has been taken. One thing that one more point. In this context, I would want to have one word said, if you permit me, sir. Yes. I'm not saying something which is done, which is against the law, which is against the rules of the House. We should repeat it if it was wrong. If it was wrong, it should not be done. I agree. But how is it in 2014? Yes. When Delhi government's National Capital Territories budget was presented, supplementary demands for grants was raised. That day, the same thing was allowed. The same thing was allowed. No. I knew this will come, and that's why I said, if wrongs were done earlier, we shouldn't repeat it. But it was not a wrong, and that was allowed by the chair then, is established. And therefore to say that was wrong, but you don't do wrong, itself is wrong. That time the chair allowed it, this time the chair kindly allow it is my appeal. And therefore to say that is wrong now, for a party which was in power and seated here at that time, is such a matter of shame. You'll do it, and the chair will allow it at that time, whereas it's not right now. How is that, sir? सभापति महोदय, मैं सुबह से अपोजिशन को सुन रहा हूं। ये रूल कोट कर रहे हैं सर, लोकसभा का कोट करें, हम लोग सभी लोकसभा के सदस्य हैं, रूल से बाइंडेड है। लेकिन जो भारत का संविधान है सर, यही बाइबल है, यही रामायण है, यही महाभारत है। इसका 357 और 118 यदि पढ़ ले हमारे दोनों बड़े अच्छे वकील हैं सर, प्रेमचंद्रन साहब और मनीष तिवारी साहब, तो शायद मुझे नहीं लगता कि कोई बहस की गुंजाइश है। 357 कहता है कि यदि लेजिस्लेशन जो है वो फंक्शनल नहीं है तो पार्लियामेंट को अधिकार है, और 118 संविधान का आर्टिकल ये कहता है कि पार्लियामेंट को जल्दी इसको क्लियर कराने के लिए जो कुछ भी करना पड़े इमीडिएट करना चाहिए। फाइनेंशियल बिल के लिए पार्लियामेंट एकदम क्लियर है। Okay. I have not finished. One more. 1 minute.
One more, see, what is the hurry, I can't understand. And even I have gone through the demands for grants. Let's not, let me give my direction now. Pardon? Let the chair be allowed to No, give demand number, general budget. Sir, demand number 5 is missing. Yes, it is in respect of Ladakh. But the House should know, because if we want to go through the, and while deliberating. sir, if any demand is missing, then it is to be re-serialized. It is. You want to say something? வணக்கம். மக்கள் நிகழ்ச்சிகள் இன்னும் சற்று நேரத்தில் தமிழில் உங்களுக்கு ஒளிபரப்பாக இருக்கின்றது. Whatever is being presented, being allowed, it is just a minute back this has been handed over to me. It is humanly impossible to go through it and to articulate my viewpoint and to say... That point has already been noted. No, but you cannot make a departure. I mean, it is true that Honorable Speaker has the authority, but this cannot be done. Okay. माननीय सदस्यगण, श्री N.K. प्रेमचंद्रन ने नियम 216 के अंतर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। माननीय सदस्य की तर्क है कि जम्मू तथा कश्मीर से संबंधित वर्ष 2022 और 23 के मूल मांगों के साथ वर्ष 2021 और 22 के अनुपूरक अनुदानों की चर्चा नहीं हो सकती है। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय के तरफ से सदन को बताना चाहता हूं कि आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुदानों की मांगे वित्त वर्ष के शुरुआत में पूर्व ही प्रस्तुत की जाती है और पारित भी होती है। संविधान के अनुच्छेद 115 में प्रावधान है कि यदि सभा द्वारा पारित की गई मूल मांगों द्वारा प्राधिकृत रकम और वर्ष के प्रायोजनों के लिए अपर्याप्त पाई जाने हैं अथवा किसी ऐसे नए सेवा पर जिसका अनुदान उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण में न किया जा सका है, सरकार को पैसा चाहिए तो सरकार ऐसी आवश्यकता हेतु परवर्ती सत्रों में अनुपूरक मांग ली जा सकती है। जब ऐसे अनुपूरक मांग किसी सत्र में सदन के सामने लाई जाती है, उस स्थिति में नियम 116 यह निषेध करता है कि अनुपूरक अनुदानों पर बोलने समय सदस्य उन मूल मांगों पर चर्चा न करें जो सभा द्वारा पहले ही सामान्यतः बजट सत्र में पारित की जा चुकी है। अतः अनुपूरक मांगों पर बोलते समय सदस्य केवल उन्हीं मांगों पर बोलें जिनसे अनुपूरक मांग बनी है, सदस्य पहले ही पारित मूल मांगों की चर्चा में लाएं। मत संख्या 25 पर सूचीबद्ध मूल मांग आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए रकम का प्रावधान करने के बारे में है, जबकि मत संख्या 26 पर सूचीबद्ध अनुपूरक अनुदान वित्त वर्ष 21-22 से संबंधित है। वर्ष 1921-22 की मूल मांगे ये सदन पहले ही 18 मार्च 2021 को पारित कर चुका है। मत संख्या 25 पर सूचीबद्ध आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुदानों की मूल मांगों तथा मत संख्या 26 पर सूचीबद्ध अनुपूरक मांगों का परस्पर कोई संबंध नहीं है और इन पर एक साथ चर्चा करने से नियम 216 का उल्लंघन नहीं होता है। अतः मैं व्यवस्था के प्रश्न की खारिज करता हूं। माननीय सदस्य, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके द्वारा उठाए गए मुद्दे प्रक्रिया की संबंधित नहीं है। ये मुद्दा इसलिए व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। माननीय मंत्री जी इस विषय की जांच करवा लें। मिसिंग डिमांड नंबर 5, जो मिसिंग डिमांड नंबर 5
आप बता दीजिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे पहली बार नहीं है जब किसी राज्य की बजट पर चर्चा उसके प्रस्तुत किए जाने की दिन ही हो रही हो। पूर्व में भी राज्य की बजट एक ही दिन प्रस्तुत किए गए हैं तथा चर्चा के लिए गए हैं। इसी प्रकार अनुदान की अनुपूरक मांगे भी प्रस्तुत किए जाने की दिन भी चर्चा में ली गई है। मिस्टर मनीष तिवारी। कई बार। Thank you very much, Mr. Chairperson. Before I commence the discussion on the budget and the demand for grants for Jammu and Kashmir, may I once again reiterate my objection that Rule 205 of the Rules of Procedure and the Conduct of Business of the Lok Sabha is a fundamental rule. It constitutes what could be called one of the pillars of the basic structure on which this temple of democracy runs. And so therefore, it is my contention, Mr. Chairperson, that a ruling on this particular point, where the word used in Rule 205 is not may, it is shall. And there are no extraordinary, exceptional circumstances why the debate has to be held on the same day as the budget documents have been tabled. And this, in my respectful submission, sets an extremely unhealthy precedent and may in future be extrapolated to situations which are far, far more serious than what we are confronting today. So, therefore, I would request that my objection be noted, Mr. Chairperson, sir. Number two, I have requested for a ruling because in my estimation 205 I'm not Yadav sahab, I am not yielding. मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं, पर 388 में पावर स्पीकर को है, उसको अंडरमाइन नहीं करना। मैं यही आपको कहना चाहता हूं कि कुछ ऐसे रूल्स हैं जो इस नियमावली का बेसिक स्ट्रक्चर है और मैं इसके ऊपर अध्यक्ष महोदय से रूलिंग चाहता हूं कि क्या वो रूल जिसमें शब्द इस्तेमाल किया गया है हाउस शैल नॉट डिस्कस can those rules be respected? Why did you do it in 2014? That also you can explain. Well, you should have pointed it out in 2014. You were sitting here, you should have pointed it out. That is not an excuse. Mr. Parliamentary Affairs Minister, you were sitting here on these benches. If we were doing wrong, why didn't you point it out at that point in time? Honorable is that a defense? Sir, I'm sorry. That is not a defense. Sir, I would like to just say, you could have pointed out as one thing. No, he could have. Sir, let me say this. He could have pointed out as a very, very powerful line to say, but all of us will have to accept the chair's pronouncements. We followed that in 2014. Forgetting that, if you raise the question again, that the chair's ruling exists on this, even as far back as 2014. The issue shouldn't have been raised at all. There is a precedent. Mr. Chairperson, sir, I am asking for a ruling. In fact, I didn't yield to the Honorable Finance Minister, but notwithstanding that, if she wanted to make her point, well, she has that discretion. But I would again like to reiterate before I start this discussion, Mr. Chairperson, that on this particular point, with regard to the budget, which is the sacrosanct duty of this House, can a violation of procedure in this manner be done? My second fundamental objection, Mr. Chair, and I would request you please do not subtract this from my time. Jammu and Kashmir is not the only union territory in this country. Jammu Kashmir कोई अकेला केंद्र शासित प्रदेश तो है नहीं, चंडीगढ़ भी है, लक्षद्वीप भी है, दमन और दीव भी है। तो मैं
आपके माध्यम से अध्यक्ष जी सत्ता पक्ष से ये जानना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के बजट के ऊपर इस सदन में अलग से चर्चा कैसे हो रही है और क्यों हो रही है? अगर आप ये परंपरा डालना चाहते हैं कि केंद्र शासित प्रदेशों के जो बजट हैं उनकी चर्चा इस सदन में होनी चाहिए, तो फिर तो सारे केंद्र शासित प्रदेशों के बजट की होनी चाहिए, फिर चंडीगढ़ के बजट की भी होनी चाहिए, फिर दमन दीव के बजट की भी होनी चाहिए, फिर लक्षद्वीप के बजट की भी होनी चाहिए। ये जम्मू कश्मीर के बजट के ऊपर अलग से चर्चा क्यों हो रही है? ये अध्यक्ष जी एक व्यवस्था का विषय है और इसके ऊपर भी मैं ये उम्मीद करूंगा कि चेयर की तरफ से इसके ऊपर कोई ना कोई रूलिंग दी जानी चाहिए कि क्या ये परंपरा अगर हम डाल रहे हैं तो अगली बारी सब हर केंद्र शासित प्रदेश के बजट की चर्चा इस हाउस में होगी। मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, मैं उसका स्वागत करता हूं, बट देयर कैन नॉट बी different strokes for different folks. Rules need to be applied in a uniform manner. एक चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, யூனியன் பிரதேசங்களுடைய பட்ஜெட்டை பற்றி விவாதிக்க வேண்டும் என்றால் அனைத்து யூனியன் பிரதேசங்களுடைய பட்ஜெட்டை பற்றியும் விவாதிக்க வேண்டும். எதற்காக ஜம்மு காஷ்மீருடைய பட்ஜெட்டை மட்டும் இங்கு விவாதிக்க விரும்புகிறீர்கள்? இதற்குண்டான விளக்கத்தை நீங்கள் அளித்தே ஆக வேண்டும். That was first approved here in the house. No. Which was not allowed. Therefore, it is for the House to take a view whether any rule is to be suspended or not. When any such motion for suspension is brought before the House by Honorable Minister or any other member, subject to permission of Honorable Speaker. And the other point which you want a ruling, I think the matter is clear now. The House functions not only by rules and directions, House also functions on precedents. And many a time, we have a rules committee. Rules committee can consider if there is some difference during implementation of certain rules, then the rules committee will take cognizance of it. So in that respect, I believe what is being raised by Honorable Member Mr. Tiwari can also be deliberated in the Rules Committee. But final say is of Honorable Speaker and also of the House. Budget of Union Territories, I would just like to mention here, without legislature, is included in demand for grants of the Union Ministry of Home Affairs. I think that settles. Let us start this. नहीं, सभापति महोदय, नहीं है तो मैं बैठ जाता हूँ। मनीष जी सीनियर मेंबर हैं और मैं उनकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। मतलब जब वो अपनी सरकार में भी थे तो कई एक बार उन्होंने जो देश के लिए जेन्युइन चीज थी वो उठाया, इसलिए मैं उनकी रेस्पेक्ट करता हूँ। संजोग से हम दोनों साथ ही इस पार्लियामेंट में आए। मैं ये देख रहा हूं पहली बार, और मुझे आश्चर्य हो रहा है कि मनीष तिवारी जी कह रहे हैं सभी रूल का जो अंतिम जिस्ट है सर 389, जिसके बारे में आपने जिक्र किया कि वो स्पीकर को इस सभा को संचालित करने के लिए सारा अधिकार देता है कि स्पीकर सारे रूल को, सारे कानून को स्थगित कर सकते हैं, और 389 के बाद यदि स्पीकर की रूलिंग आ गई है फिर इसके ऊपर चर्चा कहीं से मैं उचित नहीं समझता हूं। ठीक, ओके, थैंक यू मिस्टर तिवारी। अध्यक्ष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी मैं इस चर्चा की शुरुआत इस बात से करना चाहता हूं कि मुझे 12:45 पर ये जो बजट के कागज हैं ये प्राप्त हुए हैं, और मुझे नहीं लगता कि अगर आइंस्टाइन भी चाहते तो वो 1.25 घंटे में इस सारे जो बजट के दस्तावेज हैं, शायद 7 किताबें हैं, उनको अपने संज्ञान में ले पाते, और मैं अपने आप को कोई आइंस्टाइन नहीं मानता हूं, और इसलिए I would like to plead ignorance that I have not been able to read this budget, and I would like to place it on record
that it is humanly possible to read this budget. और इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर के ऊपर चर्चा है, बजट उसका एक माध्यम है, तो जो एक सार्वजनिक जानकारी है जम्मू कश्मीर को लेकर, उसकी आर्थिक परिस्थिति को लेकर, उसके बारे में मैं अपना वक्तव्य इस सदन के समक्ष रखूंगा। मैंने बहुत जल्दी से कोशिश की कि जो माननीय वित्त मंत्री जी का बजट भाषण है जम्मू कश्मीर को लेकर, उसको पढ़ने की कोशिश करूं। उनके बजट भाषण के 35वें सफ़े पे जो पैरा 13.1 है, उसमें वो कहती हैं कि द बजट 22-23 फॉर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर shall focus on good governance, deepening grassroots democracy, accelerated development and inclusive growth, facilitating investment and industrial growth, infrastructural development for improving quality of life, and employment, youth initiatives, and women empowerment, and broadening social inclusion. अध्यक्ष जी, ये बहुत ही अच्छे अल्फाज हैं और जिसे अंग्रेजी में कहते हैं दे आर एक्सट्रीमली नोबल सेंटिमेंट्स। पर जो जमीन की हकीकत है, जो जमीनी परिस्थिति है, वो जमीनी परिस्थिति कुछ अलग है। इस सदन में 6 अगस्त 2019 को जब ये फैसला हुआ कि धारा 370 को हटाया जाएगा और जम्मू कश्मीर राज्य, जिसकी संरचना वर्ष 1822 से लेकर वर्ष 1846 के बीच में की गई, उसका विभाजन कर उसको 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा, तो सत्ता पक्ष के तरफ से 2 दलीलें रखी गई। पहली दलील ये रखी गई कि इस प्रक्रिया से जम्मू और कश्मीर का जो भारत के साथ विलय है वो और सुदृढ़ होगा, द स्टेट विल बी इमोशनली इंटीग्रेटेड। और दूसरा जो उद्देश्य बताया गया, इससे जम्मू और कश्मीर में जो विकास का कार्य है वो और तीव्र गति से होगा। आज 33 महीने हो गए और इन 33 महीनों में क्या ये जो दोनों लक्ष्य हैं इसको पूरा करने में सरकार सफल हो पाई है? और मैं बहुत ही अदब और सत्कार के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि उसका जो जवाब है वो ना में है, और मैं उसको प्रमाणित करने के लिए इस सदन के समक्ष कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। आज भी जम्मू कश्मीर में जो कानून और व्यवस्था की परिस्थिति है वो चिंताजनक है, और जितनी परिस्थिति 2019 में संवेदनशील थी, 2022 में भी स्थिति उससे ज्यादा ही संवेदनशील है। जम्मू कश्मीर एक सरहद का राज्य है और सरहद के राज्य में जो सरहद पे होता है उसका असर सीधा सीधा राज्य के अर्थव्यवस्था के ऊपर, राज्य की जो सोसाइटी है उसके ऊपर पड़ता है। और जम्मू कश्मीर में वर्ष 2018 से अगर आप उठा के देखिए तो वर्ष 2018 में 2936 सीज फायर वायलेशन हुए थे। 2019 में जब धारा 370 को हटाया गया और प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो यह बढ़कर 3279 हो गए। वर्ष 2020 में ये 5100 हो गए और वर्ष 2021 में इसके बावजूद कि पाकिस्तान के साथ एक सीज फायर एग्रीमेंट के ऊपर आम सहमति बनी, वर्ष 2021 में भी जो ये सीज फायर वायलेशन थे ये 664 थे। और मैं इसलिए ये आंकड़े सदन के समक्ष रखना जरूरी समझता हूं क्योंकि वर्ष 2004, 2005, 2006 और ऑलमोस्ट वर्ष 2000 इन तीनों सालों में तो शून्य थे, पर वर्ष 2013 तक ये सीज फायर वायलेशन 100 से कम रहे थे। और ये जो आंकड़े हैं ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अप्रैल 2020 से जो पूर्वी लद्दाख में परिस्थिति है वो अत्यंत ही संवेदनशील है। चीन की फौज
उन इलाकों में घुसी हुई है जिनको भारत अपनी सरजमीन मानता है। और 2020 से लेकर आज तक जो परिस्थितियां हैं भारत की वो बढ़ी है। ये एक बहुत ही गंभीर संवेदनशील सवाल है और मैं ये उम्मीद करूंगा कि सरकार इसको जरूर अपने संज्ञान में ले। दूसरा सवाल, कश्मीर के नौजवान हैं जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हुए, उनको मार गिराया गया। 70% of those locals who had joined the militancy were neutralized. पर जो चिंता का विषय है, वो चिंता का विषय ये है कि क्या वर्ष 2019 से जो लोकल नौजवानों का इस आतंकवादी गतिविधियों में उनकी इन्वॉल्वमेंट है कि क्या वो बढ़ी है? और अगर बढ़ी है तो ये एक बहुत ही चिंता का विषय है और मैं उम्मीद करूंगा कि सरकार जरूर इसको बहुत ही गंभीरता से अपने संज्ञान में ले। तीसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, कि इस सदन में 8 अगस्त 2019 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था और 18 अक्टूबर 2020 को माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि जम्मू और कश्मीर के स्टेटहुड का जो विषय है उसके ऊपर जल्द निर्णय होगा, जल्द फैसला होगा। आज हम मार्च 2022 में हैं। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि जो वक्तव्य माननीय प्रधानमंत्री ने इस सदन में 2019 में दिया या उसके बाद कई बार माननीय गृह मंत्री ने दिया, सरकार उसके ऊपर कब अमल करने जा रही है? कब जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड है उसको रिस्टोर करने जा रही है? इसके साथ साथ अध्यक्ष जी, आजकल जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन की प्रक्रिया चल रही है। वहां पे नए विधानसभा के क्षेत्र बनाए जा रहे हैं और जहां तक मेरी जानकारी है कि उस प्रक्रिया से वहां की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कुछ ज्यादा खुश नहीं है। और एक ये आम बात है कि राजनीतिक पार्टियों को उस सारी प्रक्रिया में बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व करने की जरूरत है। उसके साथ साथ कई जिले ऐसे हैं जिन जिलों में आरक्षण की वजह से कहीं ऐसी परिस्थिति ना उत्पन्न हो जाए कि जो लोग आरक्षण से बाहर हैं वो कंप्लीटली अनरिप्रेजेंटेड रह जाए। और इसके अलावा एक चीज मैं विशेष तौर पर कहना चाहूंगा, क्योंकि इस प्रदेश की संरचना में महाराजा रंजीत सिंह का एक बहुत बड़ा रोल था। 1822 में उन्होंने राज तिलक किया था राजा गुलाब सिंह जी का। तो इसलिए वहां पे जो सिख माइनॉरिटी है उसको जम्मू कश्मीर की विधानसभा में प्रावधान देने के लिए, जैसे यहाँ पे एंग्लो इंडियंस को हम रिप्रेजेंटेशन देते थे, क्योंकि अब लेजिस्लेटिव काउंसिल रही नहीं, तो क्या जो वहां पे सिख माइनॉरिटी है, सिख माइनॉरिटी को आप उस विधानसभा में प्रतिनिधित्व देंगे, कुछ सीट्स को वहां पे रिजर्व करेंगे? इन मुद्दों के ऊपर चिंता करने की जरूरत है। अब मैं वहां की इंडस्ट्री के ऊपर आता हूं। एक बात जो कही गई थी कि जब धारा 370 हट जाएगी तो बाहर से बहुत सारे निवेशक आएंगे और जम्मू और कश्मीर में उद्योग लगाएंगे, जिससे वहां पे जो नौजवान हैं उनको रोजगार मिलेगा। अब जम्मू कश्मीर की सरकार की तरफ से जो बयान सार्वजनिक हुए हैं उसके हिसाब से अभी तक 99.9% जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री लगाने की याचिका दी है वो जम्मू कश्मीर के मूल निवासी हैं। The moot point being, there is negligible interest by investors outside Jammu and Kashmir for investing in that state. अब आप स्टेट की इंडस्ट्री की हालत देख लीजिए, और मैंने ये आंकड़े सदन के समक्ष एक बारी पहले भी रखे थे कि कश्मीर में तो इंडस्ट्री है नहीं। जम्मू में जो 3 जिलों में इंडस्ट्री थी, जम्मू, सांबा और कठुआ, उसमें से जो टोटल इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे 12,997, उसमें से 5,890 काम कर रहे हैं और 7,107 इंडस्ट्रियल यूनिट बंद हो चुके हैं।
और अध्यक्ष जी, ये बहुत चिंता की बात है कि अगस्त 2019 में जब धारा 370 को हटाया गया और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो पहले 4 महीने में ही जो ह्यूमन राइट्स इन जे.एंड.के करके एक संगठन है, उसके हिसाब से बहुत बड़ा माली नुकसान हुआ है। और अगर जम्मू कश्मीर चेंबर ऑफ कॉमर्स के आंकड़ों को आप संज्ञान में ले, पहले 120 दिन में 17,877 करोड़ का नुकसान हुआ है। और सबसे ज्यादा नुकसान पर्यटन और हैंडीक्राफ्ट, जो बेसिक इंडस्ट्री है जम्मू एंड कश्मीर की, टूरिज्म और हैंडीक्राफ्ट को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। मैं ये सारी बातें सदन के समक्ष इसलिए रख रहा हूं क्योंकि इन पिछले 3 वर्षों में जम्मू कश्मीर एक बहुत ज्यादा ही कठिन परिस्थिति से गुजरा है। चाहे आप इंटरनेट शटडाउन्स की बात कर लीजिए, 5 अगस्त 2019 से मार्च 2020 तक 2213 दिन इंटरनेट बंद रहा। मार्च 2020 से लेकर मार्च 2022 तक 100 बारी इंटरनेट को बंद करना पड़ा। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो जम्मू कश्मीर का पूरे अगर भारत को संज्ञान में ले तो उस मात्रा में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जम्मू एंड कश्मीर का अभी भी बहुत ऊपर है। इसके अलावा स्कूल बहुत सारे दिन वहां पे बंद रहे। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है अध्यक्ष जी कि जिस विचारात्मक उद्देश्य को लेकर ये सरकार अगस्त 2019 में चली थी कि आर्टिकल 370 को, धारा 370 को धराशायी करके और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाकर जम्मू और कश्मीर का विकास, तरक्की, उनके नौजवानों को रोजगार, उनके जो इंडस्ट्री है उसकी खुशहाली होगी, क्या उन उद्देश्यों में सरकार सफल हो पाई है? और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जो मैंने थोड़े बहुत आंकड़े देखे हैं, जो बजट प्रस्तुत किया है माननीय वित्त मंत्री ने, उसमें जो प्रशासनिक बजट है, प्रशासनिक बजट में से 73% पैसा होम डिपार्टमेंट पे खर्चा गया था। तो अगर 73% पैसा आप सुरक्षा पे खर्च रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे खर्च रहे हैं, तो ये अपने आप में प्रमाण है कि जो परिस्थितियां हैं वो सुधरी नहीं है। मैं अध्यक्ष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे समय दिया। धन्यवाद मिस्टर मनीष तिवारी जी। नाउ श्री जुगल किशोर शर्मा जी। धन्यवाद सभापति जी। जम्मू कश्मीर पर जो आज चर्चा हो रही है, जिसमें बजट भी शामिल है, मैं वित्त मंत्री जी के प्रस्ताव के साथ सहमत हूं और इसके पक्ष में खड़ा हूं। महोदय, हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 के रहते और धारा 370 की आड़ में शक्तियों का दुरुपयोग होता था। लोग, नौजवान नौकरी लेने के लिए सत्ताधारी मुखिया जो लोग रहते हैं उनके घरों के चक्कर काटते थे, रिश्वतखोरी का धंधा चलता था और लोग दरबदर होते थे। जहां पर जो विकास के लिए पैसा जाता था वो विकास पर ना लगते हुए इन्हीं परिवारों के आंगन के विकास में लगता था। और जो प्रोजेक्ट एक बार शुरू हो गया तो कई सालों तक वो प्रोजेक्ट जो है वो खत्म नहीं होते थे। लेकिन मैं महोदय बताना चाहता हूं कि आज नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व में योग्यता के अनुसार रोजगार जो है वो प्रदान किया जा रहा है।
यो पैसा विकास के लिए जाता है, जिस प्रोजेक्ट के लिए जाता है उसी प्रोजेक्ट पर लगता है। और यो वर्षों पुराने प्रोजेक्ट अदर में लटके हुए थे, वो प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं। नए नए प्रोजेक्ट जो हैं वो शुरू हुए हैं। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि विशेष तौर पर जम्मू और कश्मीर में अलग अलग मापदंड जो थे वो अपनाए जाते थे। जम्मू प्रोविंस जो है उसके साथ भेदभाव होता था, और कभी भी अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो उसे लेने के लिए जम्मू प्रोविंस के लोगों को धरने प्रदर्शन एजिटेशन करना पड़ती थी। उसके बाद मिले ना मिले वो भी कोई पक्का नहीं होता था। लेकिन आज जम्मू कश्मीर का पूर्ण विकास हो रहा है और सामान्य विकास हो रहा है, और बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। और विशेष तौर पर अगर मैं कहूं कि जब से केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार बनी है, जम्मू कश्मीर के बाग खुल गए हैं और जम्मू कश्मीर में विकास की गति जो है वो तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। और सामान्य रूप से कश्मीर घाटी हो या जम्मू प्रोविंस हो, सामान्य रूप से विकास जो है वो आगे बढ़ रहा है। नरेंद्र भाई मोदी जी का ये जो नारा सबका साथ सबका विकास, वो कारगर सिद्ध हो रहा है और विकास भी चहुमुखी विकास जो है वो हो रहा है। मैं थोड़ा सा पीछे जाते हुए आपको बताऊं कि जो अधिकार जम्मू कश्मीर के लोगों के उन्हें वर्षों तक नहीं मिले, वो अधिकार अब जाकर नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जो है वो अधिकार उनको मिले हैं। यो अधिकार उन्हें वर्षों पहले मिल जाने चाहिए थे। मैं डीडीसी की बात करूं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल और बीडीसी के जो चुनाव हैं, जम्मू कश्मीर में पहली बार ये लोगों को अपने अधिकार जो है वो मिले हैं। और 3 टाइप सिस्टम जो है उसकी स्थापना हुई है। पंचायतों को भी अधिकार मिले हैं। अब पंचायतें मिल बैठकर अपनी पंचायत का विकास कैसा हो, इस पैसे को किस तरह से लगाया जाए, उस तरह का विकास जो है वो जैसे वो चाहते हैं वैसे अपने विकास के लिए चर्चा करते हैं और वही विकास करते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि पुरानी सरकारों का दबदबा, परिवारवाद जो है वो अब खत्म हुआ है। स्वार्थ की राजनीति जो थी वो भी खत्म हुई है। लेकिन महोदय, मैं इसके साथ कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में विशेष तौर पर कोरोना काल में जो सराहनीय कार्य केंद्र सरकार द्वारा किए गए हैं उसकी भी मैं सराहना करना चाहता हूं। और कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ना होते तो इस कोरोना काल में देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर का क्या हाल होता। लोगों को आज वैक्सीन मुफ्त में दी जा रही है और विशेष तौर पर वो जो गरीब लोग थे उन्हें फ्री में राशन भी जो मुहैया करवाया गया, ये बहुत बड़ा कदम जो था और सराहनीय कदम है। मैं बड़े बड़े प्रोजेक्टों की चर्चा ना करते हुए सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में आज एम्स की बात करो, IIM की बात करो या रिंग रोड की बात करो, नेशनल हाईवे की बात करो, जम्मू एयरपोर्ट की बात करो, ये सारे कार्य जो हैं अब धारा 370 हटने के बाद जो है वो शुरू हुए हैं और तेज गति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब लोगों को कोई शिकायत नहीं है। विशेष तौर पर जम्मू प्रोविंस के लोग भी खुश हैं कि जैसे कश्मीर घाटी में विकास हो रहा है वैसे ही जम्मू प्रोविंस में भी विकास हो रहा है। और जो पैसा आता है जिस प्रोजेक्ट के लिए आता है उस प्रोजेक्ट के लिए लगता है। और विशेष तौर पर जम्मू का जो एयरपोर्ट था, बहुत बड़ी दिक्कतें इसमें हमें आती थी। आज यहाँ पर नाइट सर्विस जो है वो भी चालू हो गई है। जम्मू रेलवे स्टेशन का विकास जो है वो जोरों पर चल रहा है और जम्मू में चारों ओर सड़कों का जाल जो है वो बिछाया जा रहा है। नेशनल हाईवे बनाए जा रहे हैं और इसके साथ साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करूं जो उसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। रिंग रोड की बात करूं, पुरानी मांगों को लेकर भी बड़े सारे ऐसे कार्य हुए हैं जिनको मंजूरी मिली है। लेकिन इसके साथ साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूं कि माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर जो है वो विकास की ओर आगे बढ़ रहा है और तेजी के साथ विकास हो रहा है।
जम्मू शहर के आसपास और जम्मू शहर को सुंदर बनाने के लिए बहुत सारे सराहनीय कार्य जो है वो किए जा रहे हैं और फंड्स भी केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। और विशेष तौर पर साबरमती नदी की तर्ज पर जम्मू तवी का विकास हो, चाहे रोपवे प्रोजेक्ट की बात मैं करूं, और इसके साथ साथ ही कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं। लेकिन साथ में उपाध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों बीडीसी जो विलेज डिफेंस कमेटी थी, आज उनको विलेज डिफेंस ग्रुप के नाम से जाना जाता है, उनकी जो बड़ी पुरानी मांग थी उसको भी पूरा किया गया है। उनको सही मानदेय मिले उसकी भी चिंता की गई है। इसके अलावा भी आईआरपी की बटालियनें खड़ी की जाए, उसकी भी प्रक्रिया शुरू हुई है। शहर में बिजली और पानी की व्यवस्था ठीक हो, उसके लिए भी जो है वो कार्य किए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत के माध्यम से या फिर इसके अलावा भी कई कार्य किए जा रहे हैं। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इस बजट में भी कई सारे ऐसे बड़े प्रावधान जो है वो रखे गए हैं, उन सब की मैं चर्चा तो नहीं करूंगा, लेकिन कई हेल्थ सेक्टर में हो, यहाँ पर 29 क्लस्टर मॉडल गांव स्थापित किए जा रहे हैं। वहीं एकलव्य मॉडल जो बोर्डिंग स्कूल जो है उन पर काम चल रहा है। और यह बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर में जितने भी विकलांग लोग हैं उन सबको जो 3 पहिया साइकिल जो है वो मुहैया करवाए जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर शहरों के विकास के लिए 3112 करोड़ रुपए जो है वो रखे गए हैं। ये अच्छी बात है, पिछले बजट से भी ज्यादा और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भी यहाँ पर बात की गई है। इसके अलावा भी महोदय कई सारे ऐसे बड़े प्रोजेक्ट हैं जिन पर काम चल रहा है और विशेष तौर पर जल जीवन मिशन के माध्यम से जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बहुत बड़ी राशि जो है वो जम्मू कश्मीर को प्रदान की गई है ताकि हर घर जल जो है वो पहुंचाया जा सके। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से भी काम हो रहा है, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री आवास योजना प्लस के माध्यम से भी कुछ कार्य जो है वो किया जाए। कारण यह है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो छूट गए हैं, मैं चाहता हूं कि उन पर भी थोड़ा गौर किया जाए और वो पोर्टल जो इस समय बंद है उसे खोला जाए ताकि प्रधानमंत्री आवास योजना प्लस के माध्यम से वहां पर भी कुछ लोग जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकें। महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, वित्त मंत्री जी जहां बैठे हुए हैं, जम्मू कश्मीर में बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं, कर्मचारी हैं जो वहां पर अपनी सेवाएं जो है विभिन्न विभागों में दे रहे हैं और विभिन्न विभागों के जो कर्मचारी हैं वो नीड बेसिस है और अड़ाक बेस पर काम करते हैं और वो रोजाना धरने प्रदर्शन करते हैं। कारण एक ही है कि उनको जो सही मानदेय जो उनको मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है। मेरी वित्त मंत्री जी से प्रार्थना है कि ड्यूटी प्रशासन का आर्थिक सहायता करें ताकि ये जो कर्मचारी हैं इनको नियमित किया जाए या मिनिमम वेज एक्ट के दायरे में लाया जाए और ये अपने बच्चों का पालन पोषण भी कर सकें। और ये एक बड़ी बड़ी समस्या जो है वो बनी हुई है, लेकिन उपराज्यपाल महोदय इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने पिछले दिनों 12,000 कर्मचारियों को नियमित करने की घोषणा की है। यह बहुत बड़ा एक सराहनीय कार्य है, लेकिन यह क्रम जारी रहे उसके लिए जम्मू कश्मीर की मदद जो है हमें करनी होगी। मनरेगा के माध्यम से बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं, बहुत बड़ा बजट भी आपने रखा है, लेकिन 17-18 और 16-17 की कुछ काम ऐसे हुए हैं जो किस वजह से उन लोगों को उनका पैसा उनको नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था। वो लाइबिलिटी एक खड़ी हुई है जम्मू कश्मीर ड्यूटी प्रशासन पर, वो बकाया राशि जो है वो उनको दी जाए जिन्होंने वो काम किए गए हैं। मैं वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि उसके लिए भी आर्थिक सहायता जो है वो ड्यूटी प्रशासन की जाए। इसके अलावा भी मैं ये कहना चाहता हूं कि सीआरएफ माध्यम से बहुत अच्छे ब्रिज और रोड वहां पर बन रहे हैं, लेकिन इस कोरोना महामारी के कारण वो जो पैसा थोड़ा कम पड़ गया। अब ये कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो रुक गए हैं, कई सारे प्रोजेक्ट हैं। हालांकि केंद्र अपना ड्यूटी प्रशासन ने कुछ ऐसे प्रावधान किए हैं कि कुछ प्रोजेक्ट ले लिए हैं, उन्हें किसी और हेड से पैसा दिया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे अभी भी प्रोजेक्ट हैं जिन पर जो है सीआरएफ के माध्यम से पैसा नहीं गया है। मैं प्रार्थना करूंगा कि वो पैसा भी रिलीज किया जाए। मैं मिसाल के तौर पर आपको कहूं तो रोजमर्रा ही हमारे पास लोग आते हैं, जोड़ियां इंद्री पत्तन टू प्रगवाल एक बहुत बड़ा ब्रिज है जिसका बहुत बड़ा लाभ जो है वो सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों को होगा। तो मैं चाहता हूं कि इसके लिए भी पैसा जो है वो उपलब्ध करवाया जाए और सांबा सुंब रोड और ऐसे कई ऐसे रोड और ब्रिज हैं
यहाँ काम रुका पड़ा है, जिससे कि लोग जो हैं वो दुखी हैं। मैं जानता हूं कि जम्मू से अखनूर और अखनूर से पुंछ रोड जो है बड़ी तेज गति से आगे बढ़ रहा है, और वो जो एक 250 किलोमीटर का फासला था वो अब 190-92 किलोमीटर का रह जाएगा। वो सफर जो 7 घंटे का था वो अभी 3.5 या 3 घंटे तक सीमित रह जाएगा और सारे लोग आराम से चल सकेंगे, जा सकेंगे। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि ये जो काम चल रहे हैं ये चलते रहे, ये जल्दी से संपन्न हो, लेकिन इसके साथ साथ ही वो सारे कार्य जो रुके पड़े हैं वो भी जल्दी से आगे बढ़े। कुछ IRP की बटालियन ने वहां खड़ी करने की बात हुई थी, कुछ बच्चे जिन्होंने इंटरव्यू दिया था उसमें पास भी हुए, उनके अभी रिटर्न होने थे, लेकिन मैं चाहता हूं कि उन बच्चों को भी थोड़ी रियायत दी जाए जिन्होंने वो रिटर्न पास किया है। ये जो सीमावर्ती क्षेत्र पर आप बटालियन खड़ी करने जा रही थी, बहुत बड़ा योगदान जो है वो रोजगार के लिए जम्मू कश्मीर सरकार के लिए केंद्र सरकार ने दिया था। उन बच्चों पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए, उनको भी मौका दिया जाए और नए जो लोग हैं उनको भी मौका दिया जाए। इसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर में जो BDC के लोगों के लिए आपने किया उसके लिए मैं आपकी सराहना करता हूं। यहाँ पर हमारे मनीष तिवारी जी जो बोल रहे थे, कह रहे थे कि सीमा पर हालात कुछ ठीक नहीं है। मेरा पिछले दिनों सीमावर्ती क्षेत्रों का जो है वो दौरा हुआ, मैं पुंछ, राजौरी और नौशहरा सेक्टर में भी गया और सीमावर्ती क्षेत्र में गया। वहां सीमा पर रहने वाले जो लोग हैं आज अत्यंत खुश हैं, वो बहुत ही खुश हैं कि आज सीज फायर का पूरा पालन हो रहा है और वहां पर लोग जो हैं वो अपना घर बार छोड़कर मजबूर नहीं है, अपनी खेतीबाड़ी भी कर रहे हैं, रोजगार भी चला रहे हैं और अपने घरों में ही रह रहे हैं। रही बात डिलिमिटेशन की, यहाँ पर डिलिमिटेशन के बारे में कहा गया, वही पार्टियां नाखुश होंगी जिन्होंने शक्तियों का दुरुपयोग किया है। ये भेदभाव पहले होता रहा है, आज वो भेदभाव जो है वो नहीं हो रहा है। आज सामान्य रूप से जिसका जो हक बनता था डिलिमिटेशन ने उसे वो हक दिया है। इसलिए जम्मू कश्मीर की सरकार जो है, जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो खुश हैं कि पहली बार डिलिमिटेशन कमीशन द्वारा इंसाफ जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता के साथ किया गया है। आपने मुझे मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Sri Sogodrai ji. Sir, I rise to speak on the Jammu and Kashmir budget. The budget is roughly about 1 lakh, expenditure is 1,12,000 crores, of which capital expenditure is 41,000 crores and revenue expenditure is 71,615 crores. This is a budget for bureaucratic expenditure. And as you know, sir, the expenditure is mainly on home, police, on which 9,588 crores are being spent. Now let me first start by saying that I was opposed to abrogation of Article 370 and I am still opposed to it. It was a wrong step for which the country will have to pay in future. I think apart from fulfilling BJP's agenda, it had no other meaning. The finance minister in a speech has mentioned the concept of one nation, one constitution and one flag has been adopted in the Union. This was Shama Prasad Mukherjee's slogan. Ek Nishan, Ek Vidhan. He was a good man, died unfortunately in Kashmir. But his slogan is being implemented by his successors. Presently, Srimati Nirmala Sitharaman. What is, you have read a budget. What is the meaning of this budget being read in Parliament? Why could not Jammu and Kashmir's elected representatives, their finance minister, give this budget? What is there in this budget of Nirmala Sitharaman
that representatives of Jammu and Kashmir could not speak on? This is deprivation of the people of Jammu and Kashmir, their rights to have their own government. I am totally opposed to this undemocratic step. Sir, one gentleman called Mr. Kakru, he has written in the Kashmir Times about the situation today in Jammu Kashmir. The per capita income in J&K is recorded less than average Indian. The literacy rate is recorded below the average in India. The unemployment among educated persons is recorded 22% against 7% in India. The electricity available to public for domestic purposes is this much. ये मेरा नहीं, ये तो अभी Kashmir Times 2/3/22 is written by a Kashmiri. He's mocking you by saying that it's only 2 years interactive. He's mocking you. No, आपको तो पोस्ट मिला है प्रोफेशनल हेकलर का, हम लोग ऑफिशियली दे देंगे, प्रोफेशनल हेकलर मिस्टर निशिकांत दुबे, ठीक है? तो सर, आई वांट टू आस्क, what is the finance minister seeking to achieve through this budget? Now let me also say that this budget is basically a revenue budget. Only 37% is capital. 63% is revenue. That means salary, establishment, similar expenditure. इससे तो Jammu and Kashmir will not change. See what Jammu and Kashmir people have to say about this. Sir, I was just reading some statements. The Jammu and Kashmir Chamber of Commerce, they said that budget has nothing significant for trade and industry. It's a big disappointment for traders and industrialists who are under mounting pressure due to restrictions and continuous setbacks in the last 2 years due to pandemic and its related problems. The government has announced certain benefits for overall development of the country. But what is missing in the budget is a big announcement for marginal traders. No, he is not yielding. Who were hit by the pandemic and expecting a relief from the Modi government. Sir, one opposition party in Jammu and Kashmir has said that this budget does not address the rising unemployment and unprecedented prices of all essential items of regular use. Due to lack of spending capacity, economy. Have I said anything wrong? Are you yielding? Are you yielding? No, I am not yielding at all. I am yielding, not yielding at all. No, sir. What rule? Let him speak after me. Sir, you give him, he is a professional heckler put up by the BJP to disturb anybody who speaks against them. Sir, Tagore का एक poem है. Yes, I will. भय करे तो वो भय के नो तो जाए ना. No, his point of. जीतने के बाद भी. No, Saugat Raiji, his point. Saugat Raiji, his point of order was in 349(1). Shall not read any book, newspaper or letter except in connection with the business of the house. This is absolutely the business of the house. No, business of the house क्योंकि बजट आज पेश हुआ है सर, और वो बजट को कोट कर रहे हैं कि इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ये कहा, इस पार्टी ने ये कहा, बजट तो आज पेश हुआ ना, वो न्यूज़पेपर में कैसे छप गया सर? इसका मतलब ये पुराना स्टेटमेंट कोट कर रहे हैं. Factually correct or incorrect is not a matter of concern. Whether it may be correct or wrong. नहीं, business of the house नहीं है ना सर, business of the house बजट है आज का, और बजट आज पेश हुआ है सर. See, what he is reading. Nishikant Dubey, what he is reading is with me also. This is from the library. This is from the parliament. बजट वो गलत है ना सर, वो पुराने साल का बजट है ना, या भारत सरकार का लास्ट ईयर का है ना सर. बजट तो आज पेश हुआ, वो अखबार में कैसे छपेगा सर? No. Yes, please continue. और यदि लीक I'll carry on. Sir. No, now, he is. Sir. एक second.
He is reading about the budget just announced in the 1st February, in which allocation for Jammu Kashmir has already been stated that 35,000 something crores have been allocated, in which the trade and industry people have stated. He is quoting that. What is the point of order in it? I do not Yes, know. please continue. I do not know. Disturbance, not a point of Any single point of criticism, Please, BJP please. is on a roll. They think that any single criticism must be opposed. That is why they'll receive kudos from Mr. Modi. That, yeah, well done, boys. So, all this is an effort to attract his attention. Yes, Sir, please. Now sir, come to the subject, please. Now, slowly. Sir, Jammu and Kashmir, I remind you of Sheikh Abdullah. He formed the National Conference in Jammu and Kashmir Conference in 1931. One of the main jobs of Sheikh Abdullah was to lead the movement for land reforms in Jammu and Kashmir. Later, he was such a nationalist that later Jammu and Kashmir National Conference converted to National Conference. And I pay my tributes to Sheikh Abdullah, who always stayed in the national mainstream. The country did not treat him well, but he never deviated from the path of nationalism. Now, what is the problem? From outside, we go as tourists to Jammu and Kashmir. We take a shikara ride on Dal Lake. We go to Pahalgaon and we go to Gulmarg. We go up the skiing slopes of Gulmarg. But the people of Jammu and Kashmir remain poor because there is not so much scope for employment. Land is limited. Even after land reforms, people have not received. The other thing is handicrafts. That is solely dependent on tourist inflow to Jammu and Kashmir. Now, what has the government successfully done to improve agriculture? And the other is floriculture, olericulture, pomology, that is development of fruits, vegetables and flowers. Now, how much Philip has these things received? The point is, the point Mr. Amit Shah made in this house, I remember that very clearly that day. He said, we'll control militancy. We'll bring Jammu and Kashmir into the national mainstream. Now, there is this young minister, I have got a speech by him. He has given me a reply. He has given me a reply only in the month of December. See, Nityanand Rai, young minister. He said that I mentioned the death of armed police personnel in J&K. On 13/12/21, a police bus carrying police personnel was attacked by terrorists. 15 police personnel got injured, among them 3 died. Further, on 10th December, some terrorists fired upon police station Bandipura. In this incident, 2 police personnel received injuries. Again, 2 terrorists responsible for the incident have been killed. He said that government has adopted a policy of zero tolerance. But you know what is happening in Jammu and Kashmir? I have got a very nice report, sir, which says that J&K drop in law and order in sir, I read from his letter. मेरा नाम नहीं है इसलिए उस पर एक यही होता है. हाँ, मैं वही पे जो आप बोल रहे हैं उसी पे करें. मेरे जवाब का महोदय, मेरे जवाब का एक पार्ट बोल रहे हैं. सही तथ्य जो पुलिस पे अटैक, अच्छा हमको क्या, हमारे पुलिस उनको पूरा जवाब पढ़ना चाहिए. आंकड़ों को हमने दिया है. मेरा कोई काम नहीं है. बात यह भी था कि हमारे जवानों ने हमारी जम्मू पुलिस के साथ मिलकर सीएपीएफ और निफ्टी ने कितने आतंकवादियों को मारा है, वह भी आंकड़ा उसी में है. तो जरा कृपया अगर पढ़ें तो बड़ा. अच्छा, आतंकवादी सर, लोगों को मारने में क्रेडिट सर, आतंकवादी को मैं बोल रहा हूं सर. आतंकवादी, कितने आतंकवादी मारे गए हैं उसकी बात मैं कह रहा हूं.
सर ये मंत्री जी को जो धीरज जिसको कहता है पेशेंस कम है, उम्र कम है, इसलिए मैं उनको माफ कर देता हूँ। हाँ। यह है कि मैं गलत चीजों को सुनना नहीं चाहता हूँ, धैर्य तो पूरा है, लेकिन हमारे जवानों ने, इस देश के पुलिस जवानों ने, मिलिट्री ने, सीएपीएफ ने किस प्रकार से आतंकवादियों के सफाई में लगे हैं, उसको भी तो इनको कहना चाहिए, गर्व करना चाहिए इनको उस पर। Yes, sir. I am now slowly winding up. Yes. Sir, very important report, J&K, drop in law and order incident. Please. But, sir, listen to this. Please. But uptick in militant recruitment. क्या हो रहा है? Gogoi, please. Sir, what is happening in J&K, that incident, huge number, you have posted 3 lakh army personnel in J&K. You've got huge CRP, BSF, CISF, and the work. So incidents have become a few less. But what is worrisome is there is an uptick in militant recruitment. Sir, between January and December 2020, 225 militants were killed by security forces. 90 in Kashmir, 13 in Jammu. Sir, but the improvement in terms of, on counts of terrorism, there are more people joining the militants every day. This is happening why? Because there is no democracy, functioning democracy in Jammu and Kashmir. They say that we have held the panchayat election. Every other day, sarpanches are being killed by terrorists. Sarpanches do not come out of their houses. So the promise made by Amit Shah that Jammu and Kashmir will improve significantly has not been redeemed. Yes. Sir, I end with saying that you must, Nirmala ji, I know is not the boss in this matter, Amit Shah is. She has only brought the, she has only brought the budget, but Jammu and Kashmir must have elections, assembly elections at the earliest. This excuse given that we are doing delimitation, that's a bogus. Yes. That's a bogus excuse. You must have elections to the assembly in Jammu and Kashmir. You must have a proper representative government in Jammu and Kashmir. And the way to win away militants from the young people from the path of militancy is to give them the offer of participating in open election and also in giving them jobs. Unemployment is the biggest problem in Jammu and Kashmir. Development is the biggest problem in Jammu and Kashmir. And this government had significantly, signally failed in providing unemployment, employment and jobs to the people also in ensuring development. They talk of big projects, sir. We'll build a road from Katra to Amritsar. We'll build a road via Jila Pass to Ladakh. We'll build a road to Pahalgaon. No, that's not enough. Jammu and Kashmir live in small, small hamlets. Whether those hamlets are connected, that's how. And I want to ask them last of all, what happened to your promise of rehabilitating Kashmiri Pandits in the valley? They have not re-established one single Pandit family in the Kashmir valley. This is all tall talk. Ek nishan, ek vidhan. ये बीजेपी का पॉलिटिकल स्लोगन उसी का बजट है. That's why I oppose the budget. Thank you, Sir ji. Sri Srinivas Reddy ji. Thank you very much, sir. Chairman, sir, for giving me an opportunity to speak on this issue. The YSR Congress Party has always reposed our trust in the wisdom of Honorable Prime Minister
and the Home Minister to bring Jammu and Kashmir closer to Delhi and the rest of the country. To a large extent, sir, this has been achieved. The expediting of connectivity projects like Chenani-Nasri Tunnel and Naviga Tunnel has ensured this bridging doesn't remain mere talk, sir. Sir, it was a dream actually, sir, for all the South Indians, whether we can go to Srinagar or Leh, Ladakh or Pahalgam. But after the abrogation of Article 370, our Honorable Prime Minister and Honorable Amit Shah ji has brought the dream into true. That's why actually, sir, in my lifetime I have not gone to Kashmir any time. But no, sir, I went 2 months back on a committee tour. So it was so attractive that people have missed. I have missed for a long time. And that I've been actually educating all the South Indians to go and visit Srinagar or Pahalgam or Leh and Ladakh, sir. So now the development we are seeing there in that place, a lot of development is there. But actually for the tourists, budget tourists we'll have to promote there, sir. When we have gone there to that place, all the airports are also filled with the passengers, and the railway stations also filled with passengers and bus stations also. So that now, due to COVID, for almost 1.5 years, sir, the tourists they could not able to go to that place. Now it is actually slowly increasing. And people that we are giving importance to them. And moreover, sir, I am the first member to speak from the southern end of this country and not from the northeast region. It means that the issue of the certain area of a people should be taken up by only not those people. If it is really a nation which, as we project to outside, I should address the concerns of the people who are in the northeast as well as in the north, and so also they should be concerned about the people in the south. So that is unity in diversity. This is unity, and this unity cannot be brought by way of uniformity as some other people think. So the northeast region, which comprises of 8 states, the Assam, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, வடகிழக்கு பகுதி என்பது ஏறக்குறைய 8 மாநிலங்கள் சேர்ந்த ஒரு பகுதி. Sir, and this northeast region is connected to the rest of India by a narrow Siliguri corridor. Of course, as everyone pointed out, I think all the 3 members who have spoken are from the northeast. மற்றவர்களும் இதை பற்றி பேசியிருக்கிறார்கள். It is bestowed with rich natural resources like forests, மிக biotechnology, வளமையான and potential செழிப்பான of இயற்கை வளம் hydroelectric power. அங்கே இருக்கிறது. And also the strategic situation of this country acts as a very good trade market for the countries of the east through the Act East policy. அங்குள்ள பொருட்களின் மூலமாக கிழக்கு மாகாணங்களை சேர்ந்த பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் மிகவும் வளம் பெறுவார்கள். And different ethnicities and captures the hearts of the people with its culture and traditions of the natural inhabitants there. அவர்களுடைய பண்பாடும் நாகரிகமும் Many think as Mr. Ripunbora உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறது. Since they are in the hill region, they are all backward. No, not that. They set an example to the other parts of the people in the other parts of the country. மற்ற பகுதிகளிலுள்ள மக்களுக்கு அவர்கள் அதை ஒரு முன்னுதாரணமாக காண்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். 33% of the country's total, and it also receives an annual average rainfall between 2,480 millimeters to 6,350 millimeters. அதிகபட்ச மழை பொழிவு அங்கே ஏற்படுகிறது. இதன் மூலமாக அங்கு நீர்ப்பாசன வசதியும் விவசாயத்துறையும் மேம்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன. For 46,500 hectares has been created. ஏறக்குறைய 46,000 farming has been gaining pace under the region and is testament to the region's uniqueness and potential. So recently the Chief Minister of Arunachal Pradesh sent all the members of Parliament, I think so, பார்லிமென்ட்க்குள்ள kiwi fruits, அனைத்து உறுப்பினர்களும் அங்கு ஒரு முறை சென்று organic farming, and he has given a detailed letter of how it is being produced and also sought encouragement from the other sections of the people. நடவடிக்கைகளை அவர்கள் எடுத்திருக்கிறார்கள் என்பதை அவர்கள் கண்கூடாக காண வேண்டும். Normally anything which is produced in the hills will be tasty, and this is organic, totally organic,
And he has also cited that many இயற்கை other முறையில் things அவர்கள் are எப்படி mentioning விவசாயம் செய்கிறார்கள் and என்பதை he காண needed வேண்டும். support. Of course, அது மட்டுமல்ல also we appreciate மலை in பிரதேசங்களில் return that, உருவாகக்கூடிய yes, you should be அனைத்து supported in other things விளைபொருட்களும் also. மிகவும் சுவையாக இருக்கும். Sir, the economic and infrastructural development of the region is progressing at a faster pace with increasing fund allocation for construction பொருளாதார of roads and ரீதியாக highways அந்த connecting பகுதி cities and இப்பொழுது districts. மிகவும் However, வேகமாக sir, வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. the post-colonial development in this region has faced and is facing challenges which hampers the development. That we should not forget, sir. Sir, in what manner? ஆனால் Because it அந்த has பகுதியை led to the சேர்ந்தவர்கள் lower pace of எதிர்கொள்ளும் growth, சவால்களை both நாம் கருத்தில் economic கொள்ள and வேண்டும். social. And also in terms of industrialization and development of contributes little to India's GDP. Only because of the challenges which the region is facing. இந்திய கலாச்சாரத்துக்கு We may ஏற்றாற்போல் sanction more அங்கு funds, sir, but what தொழில்துறை happens வளர்ச்சியை actually? மேம்படுத்த The வேண்டும். region suffers a decreased connectivity in terms of railways and road networks and continues பெரும்பாலும் to face அந்த பகுதிகள் civil disturbances. I expected any ரயில் one of போக்குவரத்து these வசதி members from இல்லாமல் the இருக்கின்றன. northeast would have focused on that, which I would like to. Why a region is not able to come up to the extent it should have been? There are many reasons, out of which the main குறிப்பாக reason ரயில் is the civil போக்குவரத்து வசதிகள் அங்கு மேம்படுத்தப்பட disturbance. Sir, வேண்டும். most of these states border our country. அந்த And we பகுதியில் know உள்ள pretty well பெரும்பாலான பகுதிகள் who are our neighbors, how friendly they are. So they face a very எல்லைப்புற big பகுதிகளோடு problem by இணைந்திருக்கின்றன. means of this insurgency of terrorism and other things, எல்லைப்புற and also the local பெரும்பாலும் issues which have not been addressed for தீவிரவாதத்தை long, நாம் அங்கு பார்த்து which has led to the unrest of the people and the youth in that area. Sir, the area அங்குள்ள still இளைஞர்களுக்கு witnesses இதை பற்றிய military விழிப்புணர்வை involvement நாம் and the unjust கண்டிப்பாக shootings கொடுக்க வேண்டும். and killings of civilians, just like the case that came to limelight 3 months ago when 15 civilians lost their lives in the voting area of Mon district in Nagaland due to a case of misidentity. That issue was raised in this house also. Misidentity led to the cause of death of unnecessarily 15 civilians who were supposed to be terrorists and faced an open fire from the security forces. The aftermath was equally disturbing, where the more lives were lost on both sides in the clash between the villages and the armed force later. So the region has had a history of civil conflict, and this was not the first case of such kind. A month before, an army colonel along with his family and 4 other personnel from the paramilitary force were killed. Sir, main reason for that is parts of northeast region is a hostile environment because of the act AFSPA, the Armed Forces Special Powers Act. What is that AFSPA? I cannot go in detail because of the lack of time. But sir, when this act came into existence? The act, long history, dates back to the colonial time. To sabotage the Quit India movement in 1942, the British government brought this act. And later in 1947, 4 such ordinances were brought into place, and to deal with the internal turmoil of the partition. That also one of the members who spoke here mentioned about. Because of the partition problem, again it was an ordinance was promulgated. In 1948, a single ordinance subsuming all the 4 was promulgated. It was finally repealed in 1957. But sir, in 1958, after seeing the growing disturbances owing to Naga rebellion, the act was brought back. Sir, what is the purpose of the act? The act came into force, sir, into consideration. The act comes into force when an area is declared as a disturbed area by the state government. The status which is maintained for a minimum is the armed forces to exercise increased force and grants a higher degree of considerable impunity for maintaining internal security. One of the sections in the Act, Section 4, how it empowers. In a democratic country, in a republic country, any commissioned officer, warrant officer, non-commissioned officer, or any other person of equivalent rank in the armed forces may, in a disturbed area, fire upon or otherwise use force
even to the causing of death against any person who is acting in contravention of any law or order for the time சட்டத்தை being மீறுபவர்கள் மீது enforced prohibiting the assembly of துப்பாக்கி 5 or சூடு more நடத்துவதற்கு persons அந்த சட்டம் வழிவகை destroy செய்திருக்கிறது. any arms. Okay. இது எந்த விதத்தில் நியாயம் என்று புரியவில்லை. Any person who has committed to a cognizable offence or against whom a reasonable suspicion exists that he has committed or is about to commit. ஒருவர் இந்த தவறை செய்திருப்பார் என்று சந்தேகம் ஏற்பட்டால் கூட அவர்கள் மீது துப்பாக்கி சூடு நடத்துவதற்கு இந்த சட்டம் வழிவகை செய்திருக்கிறது. Section 6 of the Act, that is very, very important. No prosecution, suit or other legal proceeding shall be instituted except with the previous sanction of the central government against any person in respect of இப்படிப்பட்ட anything done நிகழ்வுகளுக்கு or மத்திய purported to be அரசாங்கத்துடைய done ஒப்புதல் in the இல்லாமல் exercise of எந்த the விதமான power வழக்கம் conferred by this. தொடரப்படக்கூடாது என்று அதில் So the குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. unrest that is prevailing, it is not because of the issues only, because of such acts also. When the armed forces are empowered with such an enormous power, there are instances it could be misused, but when they say there could be no prosecution, இராணுவத்தினருக்கு இப்படி அளவிற்கு அதிகமான அதிகாரங்களை கொடுத்தால் என்ன நடக்கும்? not only the state which is concerned Nagaland, the other states இது surrounding all the அந்த குறிப்பிட்ட பகுதி நாகாலாந்திற்கு மட்டும் கிடையாது, மற்ற பகுதிகளும் இப்படிப்பட்ட the government has to reconsider. அதிகபட்ச அதிகாரத்தினால் பாதிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன. இதற்குண்டான முயற்சி எடுக்கவில்லை என்றால் அவர்கள் கொள்வதற்கு உரிமைப்பட்டவர்கள் என்று நாம் கருத வேண்டியதாக இருக்கும். இதைதான் ஆங்கிலத்தில் சொல்வார்கள் லைசன்ஸ் டு கில். இப்படிப்பட்ட அதிகாரம் அவர்களுக்கு வழங்கப்படக்கூடாது. The people will react in their own manner because the hilly people region. So sir, it is an appeal. What is the necessity? Why the நான் உங்களிடம் கேட்பது இதுதான், இப்படிப்பட்ட சட்டங்களை இயற்றுவதற்கு என்ன அவசியம் ஏற்பட்டது? இது மக்களாட்சி முறை உள்ள ஒரு நாடு, ஜனநாயக ரீதியாக நாம் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் அணுக வேண்டும். Very big thing to be worried, sir. Sir, the Supreme Court has also observed if an offence is committed even by an army personnel, உச்சநீதிமன்றம் இதை பற்றி தன்னுடைய கருத்தை தெரிவித்திருக்கிறது. Immunity from trial by the criminal court constituted under the criminal procedure. But there have been instances of even flouting the judgment of the Supreme Court. Sir, only one thing I would like to say, sir. கடைசியாக நான் ஒரு விஷயத்தை கூற விரும்புகிறேன். Activities continue to have which are protected under the AFSPA, which should be reconsidered immediately as I appealed. Sir, even after signing 6 years, மறுபரிசீலனை செய்யும்படி உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன். framework agreement between the National Socialist Council of Nagaland and the central government, there has been inordinate delay in the continuance of the Naga peace talks in finding a concrete solution. Sir, the region is abundant with resources ஒரு நிரந்தர தீர்வு காண்பதற்கு வெகு காலம் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. தயவு செய்து இதை கருத்தில் கொண்டு அந்த பகுதியை சேர்ந்தவர்களுக்கு ஒரு நிரந்தர தீர்வை கொடுக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். இதன் மூலமாக அந்த பகுதி ஒரு முழுமையான வளர்ச்சியை பெறுவதற்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும், அவர்களுக்கு அமைதி கிடைக்கும் என்று நான் எதிர்பார்க்கிறேன். माननीय वी विजय साई रेड्डी. Sir, thank you very much, Deputy Chairman, sir. Many honorable members have expressed their views on this subject of Northeast region. And Sushmita Madam has elaborately explained so many things, what had to be done, what is not being done, what has to be done. All these issues have been elaborately explained by her and Ripun Boraji also, and then Shivaji also. Sir, one thing what I could understand is now, at this point of time, entire northeastern region